So today we will start with perimeter and area. This is one of the very important topic जो हमारे 5th class से start होकर के 10th class तक आता है. So what is perimeter? First of all we will discuss what is perimeter. So if I tell you technically, ये एक board आपको दिख रहा है. So this boundary of the board, ये जो पूरा boundary है, if I have to put a lace over the boundary of this board, so this boundary will be the perimeter. And what will be the area? This whole part where I can write all this part is area. So we have different shapes in mathematics, like you have learned square, rectangle, triangle, and in higher classes you learn about the many more different shapes: parallelogram, rhombus, trapezium. So every shape has trapezium and every shape has area. So today we are starting with very basic shape of square and rectangle. So if I consider first of all square, what is the perimeter of square? So for this, I will draw a square. And I will consider that this is the side of the square. Let me make it more perfect. This side is called S. So it is also S, it is also S, it is also S, because we know in a square all sides are equal. So if I say what will be the perimeter of square, many of you must say ki, ma'am, we know perimeter of square is 4 into side. That is the formula. But how to find it? So if I add up all the sides, S plus S plus S plus S, this will give you 4 times of S. So my perimeter of square is 4S. Or if you are taking side as A, you can say 4A. This is very simple. Now if I talk about area of square. So children, in area we multiply. जो sides हमारे पास है हम उन्हें multiply कर देते हैं. हाँ, so we have side, these two sides we multiply. We will not write side into side into side into side. No, only 2 times these two sides. So I will say side into side, or in some instances you say side square. This is area of square. Now if I talk about rectangle, rectangle is a shape similar to square, but square में जिस तरीके से सारी sides equal होती हैं, but in rectangle we have one side is larger than the other. So we have length and breadth. This is length, L is length, B is breadth. Sometimes we call it width also. So either you say breadth or width, both are same. Now how to find perimeter of rectangle? Again, since opposite sides are equal, this is L, so this will also be L. This is B, so this will also be B. So how to find perimeter? I will add up these 4. L plus B plus L plus B. So it will become 2L plus 2B. What it will be? 2 times L plus B. This formula you need to remember. You need not to learn all these steps. I am explaining you this so that if you understand like how formula has created, then it will be more easy for you to do the more difficult questions where question थोड़ा घुमा फिरा के आ जाए, कुछ trick आ जाए. If you know कि formula कैसे आया है, तो आप difficult questions भी easily कर सकते हो. So 2 into LB, L plus B will be the perimeter of rectangle. This is, I will write again, perimeter of rectangle. Now what about its area? So its area is, again I will multiply these two, L into B. L into B is the area of rectangle. Now one more, another important thing is about the units. When we talk about perimeter and area, we should know about the units of them. हाँ, perimeter का unit क्या होता है, area का unit क्या होता है. अब हमारा ये measurement है, लेंथ हम मेजर कर रहे हैं, तो यूनिट मस्ट बी इन मीटर. क्या होगा? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और किलोमीटर और एनी अदर यूनिट, हेक्टामीटर, डेकामीटर, वो जनरली यूज नहीं होता है. जनरली वी यूज मीटर, सेंटीमीटर, और जब आप आगे और हायर लेवल क्वेश्चंस करेंगे तो किलोमीटर आ जाता है, किसी किसी इंस्टेंस में मिलीमीटर आता है. सो क्योंकि हमारा जो पेरीमीटर है
वो एक लेंथ है, आप देखोगे वो एक लेंथ है। मैं अगर एक थ्रेड लूं और यहां से मेजर करना शुरू करूं, आई गो टू दिस टू दिस टू दिस टू दिस, देन अगर आप उस पूरे थ्रेड को खोलोगे दैट विल बी अ लेंथ, पूरा एक लेंथ है। सो लेंथ का तो यूनिट मीटर या सेंटीमीटर ही होता है। और वन मोर थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि यूनिट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। आई मीन मीटर प्लस मीटर विल गिव यू मीटर, सेंटीमीटर माइनस सेंटीमीटर विल गिव यू सेंटीमीटर ओनली। हाँ, सो पेरीमीटर का यूनिट सेम रहेगा जो भी हमारा यूनिट दिया है, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर और एनीथिंग। बट इन केस ऑफ एरिया, क्योंकि एरिया में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यूनिट्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट्स भी मल्टीप्लाई होते हैं। इफ आई एम मल्टीप्लाइंग 2 times, it will be meter into meter, it could be meter square, सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां भी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां भी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और मिलीमीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर और एनीथिंग। सो एरियाज यूनिट इज इन मीटर स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट, एंड पेरीमीटर इज इन मीटर। वन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी पेरीमीटर या एरिया की, जहां पर क्वेश्चन आएंगे कि हमें फेंसिंग करना है, एक प्लेग्राउंड है उसमें हमें फेंसिंग करना है। फेंसिंग मीन्स क्या, हमें बाउंड्री पर एक वायर या रोप लगानी है। सो व्हेन वी, नाउ आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना होगा कि हमें पेरीमीटर निकालना है या एरिया निकालना है। फेंसिंग करनी है, बाउंड्री के अराउंड कुछ लगाना है, देन डेफिनेटली वी विल फाइंड आउट द पेरीमीटर। अगर हमें ग्रास ग्रो करना है या एक फ्लोर पे कारपेट लगाना है, जहां पर बात आती है हमें इस पूरे एरिया को, पूरे एक पार्ट को कवर करना है, हाँ, यू हैव टू थिंक लॉजिकली, देन वी विल फाइंड द एरिया। मोर थिंग्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।